जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प्स पेपर कम्युनिटी में। किसी वजह से कल मुझे वीडियो बीच में ही ख़त्म करना पड़ा, बट उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ गवर्नर। और देखिए, इसके अलावा हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी अभी रनिंग है। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं स्टैटिक घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जो बुकलेट आई थी, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, वो हमने डिस्कस करके रखी हुई है। जैसे ही कुछ और लेटेस्ट वर्जन आता है वी विल डिस्कस। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? देखिए, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स? तो सेंडिंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आएगा। रिजर्विंग द सर्टेन बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अगेन अ डिस्क्रिशनरी पावर। मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू, तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका बी, 1 and 3 ओनली। According to Article 356 of the Indian Constitution, the report is sent by the governor to the president that situation has arisen in which the government of state it cannot be carried in accordance with the provision of the Constitution। तो वो बताते हैं आर्टिकल 356 के अंतर्गत कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो इट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो the president may impose the president rule in that state. The making of a report by governor to the president is a discretionary power of the governor. Article 200 के हिसाब से, when a bill is being passed by the legislature of both the houses of the legislature, it shall be presented to the governor, and governor shall either give the assent to the bill or withhold the assent or resolve the bill for the consideration of the president. Now it is also the discretionary power of the governor. The statement 3 भी यहाँ पे correct हो जाता है, whereas the appointment of ministers are made by the governor on the advice of chief minister under Article 164 of the Constitution. Therefore, it is not discretionary power of the governor, and Article 166 Clause 3 of the Indian Constitution provides that governor shall make rule for more convenient transaction of business of the state legislature, but not related to any business of the Constitution on which governor acts. So, ये भी एक discretionary power नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन द बिल रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड, बट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पास्ड बाय इट एंड सेंट टू द गवर्नर। नाउ अब इस केस में क्या होगा? वेयर असेंट टू दैट एक्ट वॉज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन अ बिल रिकमेंडेशन गवर्नर की रिक्वायर्ड थी, बट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड देन इसको पास करके फिर गवर्नर को सेंड किया गया। नाउ वेयर द असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड। तो वो जो असेंट है वो इनवैलिड नहीं होगी उस केस में। नेक्स्ट, द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर इज नेसेसरी, सो इट इज़ नेसेसरी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, ऑर्डिनेंस का स्टेट में जो आर्टिकल है वो है 213। सेंट्रल लेवल पे जब देखते हैं तो इट इज़ 123। सो आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। नाउ इट shall have the same force and effect as an act of legislature of the state assented by the governor. But every such ordinance shall be laid before the legislative assembly of the state, or where there is a legislative council in the state, before both the houses, and shall cease to operate the expiration of 6 weeks from the re-assembly of the legislature. Or if before the expiration of that period कोई resolution आ जाता है disapproving it, is passed by the legislative assembly and now it is agreed to by the legislative council, if any, upon the passing of resolution or
as the case may be, on the resolution being agreed by the council of ministers by the council. ठीक है, तो स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, आर्टिकल 213. अगेन सेम ही क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस 213. सेम क्वेश्चन फिर से देखिए. 155 जो है, इट इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. गवर्नर को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. 156 है, इट इज़ अबाउट द टर्म ऑफ द गवर्नर. गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. 212 is about prohibiting the court from inquiring into proceeding of the legislature. 213 is the article which is empowering the governor to promulgate the ordinances on urgent matter during the recess of the legislature. ठीक है. नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है. सो इट इज़ 213. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट, नाउ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. is appointed by the president, सही है. holds the office during the pleasure of the president, correct. is the head of the state's executive power, true. normally holds the office for 5 years, this is also true. ठीक है. next, so appointed by the president वो आ जाएगा 155 में. 154 says the governor is the executive head of the state and pleasure of the president आ जाएगा 156 में. ठीक है. 156 क्लॉज 1. और नॉर्मली ये जो रहते हैं, इनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल का रहता है. दिस इज अमंगस्ट 156 क्लॉज 3. Now state governor is appointed by, so state governor is appointed by the President of India. The appointment of a governor in a state is made as per the provision, so it is made as per the provision under Article 155. Now which of the following statements about the state governor is not true? He is a part of the state legislature, this is true. हमें not true बताना, this is true. He can pardon a death sentence, this is not true. He does not appoint judges of the state high court, he does not appoint judges of the state high court, true. President appoint करते हैं but with the advice of the governor. He has no emergency power, true. Now according to Article 161, governor shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of the punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person who is convicted of any offence against any law, but governor is not empowered to pardon a death sentence. Next question, assertion reasoning question है. First is, assertion says that the president or a governor cannot be sued in a court of law for any act. Reason is the president can be impeached and governor may be dismissed for unconstitutional act done. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 क्लॉज 2 देखेंगे अगर हम, सो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स whatsoever shall be instituted or continued against the president of India or the governor of any state in any court during its term of office. But provision of 361 clause 4 says that a civil proceeding can be instituted. Civil proceeding हो सकती है, criminal नहीं करनी है. So it can be instituted against the president or the governor of the state during its term of office after 2 months of giving written notice. तो पहले आप उनको 2 महीने का written notice दो, then in that case you can actually institute a civil proceeding, not a criminal proceeding. So first statement हो जाता है गलत, assertion is wrong. Now Article 61 of the Constitution, it mentions the procedure for the impeachment of the president, and according to it the governor shall hold office during the pleasure and he may be dismissed for the unconstitutional acts done. So reason is correct. Next, governor's salary and allowances are given by, so it is given by the consolidated fund of the state. ठीक है. Article 202 clause 3 sub clause A. Next, no criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. सही है. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. ये भी सही है. सो बोथ आर करेक्ट. आर्टिकल 361 में बोलते हैं कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, एंड आर्टिकल 158 सेज दैट
The emoluments and allowances of the governor shall not be dismissed during the term of his office. Next, to whom is the governor of a state responsible? So governor of a state is responsible to president. ठीक है? The governor of a state is responsible to president. Under the constitution, the governor is the head of the state and is appointed by the president of India. Under article 156 clause 1, he or she hold office during the pleasure of the president, which in effect means the union government. Now a governor's term of office under article 156 clause 3 is 5 years. Governor's term of office under article 156 clause 3 ये होता है 5 years. Now which is subject to the pleasure of the president. Next, who remains in office as long as the president of India wishes, so he is or she is governor. The Constitution of India does not contain any provision for the impeachment of. So it is for the impeachment, does not contain any provision for the impeachment of governor of a state. Governor of a state appoint कौन करते हैं इसको? Appoint करते हैं इनको president. Now president by warrant under his hand and seal. Now he holds office during the pleasure of the president. President may be removed from the office by impeachment in the manner provided in Article 61. Now vice president जो है, he or she may be removed from his office by a resolution of a council of a state passed by the majority of the house of all the then members of the council and agreed by the house of the people. Article 67. Chief Justice of India shall not be removed from his office except by an order of the president passed after address by each house of the parliament, supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the membership of that house present and voting, has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. Article 124 clause 4. And a president, vice president can be removed for violation of Constitution of India. Impeachment जो word है, it is used only to remove the president. It is not used in India for any other authority under other than the president. तो impeachment word का use जो है वो किसी और authority के लिए नहीं होगा other than the president. Article 156 of the Constitution of India provides that the governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Now which of the following can be deduced from this? That no governor can be removed from office till the completion of his term? नहीं. No governor can continue in office beyond the expiration of 5 years? नहीं, ये भी नहीं है. देखिए आर्टिकल 156 जो है वो डील करता है ऑफिस टर्म से, किसके? गवर्नर के. ना गवर्नर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. वो रिजाइन कर सकते हैं, विच इज सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल. ठीक है. नाउ गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. गवर्नर जो है वो ऑफिस होल्ड किस टाइम के लिए करते हैं? 5 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नर शेल नॉट विथस्टैंड द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल his successor enters upon the office. So both the statements are incorrect. Next, the first lady to become the governor of a state in India is she was Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was the first woman who became the governor of a state in India. After independence, she became the governor of Uttar Pradesh, and then she died in the office in 1949 only, and she became the first women governor of Uttar Pradesh. Who among the following was the first women governor of a state in free India? So she was Sarojini Naidu. Who was the first lady governor of West Bengal? Vijay Lakshmi Pandit, Padmaja Naidu, Rajnipal Rai या फिर शीला कौल? So she was Padmaja Naidu. She was the daughter of Sarojini Naidu, and after independence she became the first female governor of West Bengal from 1956 to 67, while Chakravarti Rajgopalachari was the first governor of Bengal. ठीक है. 13th February is celebrated as Women's Day every year in the memory of, so it is in the memory of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu celebrated, देखिए Women's Day मतलब कि इंटरनेशनल Women's Day नहीं, नेशनल Women's Day. इंटरनेशनल Women's Day तो 8 मार्च को होता है. National Women's Day is celebrated on 13th February. Now this day is observed on the birthday of India's first women governor, Sarojini Naidu,
and she was born on 13th February 1879 and she died on 2nd March 1949. Next, the governor who was dismissed in Rajasthan was, so he was Raghukul Tilak. अब ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू रिवाइज राइट नाउ. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर. मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर. जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए जजेस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर. एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. So every judge of a high court is appointed by the President of India by his warrant under his hand and seal, and after the consultation with the Chief Justice of India, Governor of a state, and in case of appointment of judge other than the Chief Justice, by the Chief Justice of the High Court also. While members of the Public Service Commission and the Advocate General is appointed by the Governor on the advice of Chief Minister. ठीक है. तो देखिए ये क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. वी हैव कंप्लीटेड इट. नेक्स्ट विच वील डिस्कस इज द स्टेट लेजिस्लेचर. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.